ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। My name is Jasdeep Kaur. I am a career counselor, well-being coach and a public speaker. Today's morning hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Ram Das Ji in Raag Jaitsri अंक 698 of Shri Guru Granth Sahib Ji। पढ़दे हाँ, समझदे हाँ, फिर अपनी जिंदगी विच अमल करदे हाँ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जैतश्री महला चौथा, कर दूजा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। हर हर सिमरो अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उर तारे। हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट होई राम। Guru Ramdas Ji is blessing us with this beautiful शब्द। हे गुरमुखो, अपहुंच ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਬਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हे हरि प्रभु, सानू सतगुरु महापुरख मिला दियो। गुरु मिलन नाल ही सदीवी आत्मक आनंद प्राप्त हुंदा है। हे मेरे प्यारे मित्रों, पवित्र नाम हिरदियां विच टिकाउंदे होए प्रभु दे गुण गान करिया करो। हे प्यारे मित्रों, हमेशा ही सतगुरु दी शरण विच रहो। जो वड्डे भागा सदका सतगुरु मिल पए तां परमात्मा हिरदे विच प्रगट हो जांदा है। Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. बचपन तो ही सानू एक तरह का खाना खाने की आदत पै जाती है। साढ़े टेस्ट बर्ड्स उस तरह के खाने दे डेवलप हो जाते हैं। Now in which country we live in which region we live in, the kind of family we live in, उस तरह जो उत्थे रोज़ पकदा है साडी फैमिली विच, सारे टेस्ट बर्ड्स उस तरह डेवलप हो जाते हैं। फिर नो मैटर असी किसी भी स्टेट चले जाइए, असी किसी दूसरी कंट्री भी चले जाइए, कुछ दिन तक कपल ऑफ डेज वील इंजॉय देयर फूड, बट आफ्टर दैट वी वुड रियली लाइक टू स्विच ऑन टू आवर ओन फूड बिकॉज आवर बॉडी इज एडिक्टेड टू दैट काइंड ऑफ फूड। कितनी बारी पिज़्ज़ा बर्गर खा लोगे पर अल्टीमेटली दाल रोटी सब्जी वाल अट्रैक्ट होगे इफ़ यू आर staying in that kind of region. So now this is what happens with our life also. जिस तरह के thoughts बार बार आंदे ने, हुन now we need to see the quality of our thoughts, और अगर वो thoughts workability life विच नहीं लेके आंदे, we need to break the pattern then and there till the time वो साडे थॉट्स इन्ने पक्के हो जान कि फिर उन्हें थॉट्स नू ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस। नाउ वी हैव वेरियस एरियाज इन आवर लाइफ। इम्पॉर्टेंट एरियाज हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फैमिली, देन वी हैव और वर्क, फाइनेंसिस, बिजनेस, जॉब। जो भी एरिया तुहाडे वास्ते लाइफ विच इंपॉर्टेंट है, इन्हां सारे एरियाज विच बैलेंस लाना बड़ा जरूरी है। Now what is the fundamental thing? The fundamental thing is to produce joyful, balanced human beings worldwide. Because balance होएगा तो workability होएगी. That is why we need to check the quality of our thoughts, and जेडे unworkable thoughts ने उन्हां नू उत्थे ही break करना बड़ा जरूरी है। नहीं ते वो साडा एकदम हैबिट बन जाएंगे, फिर उन्हां तो बड़ा मुश्किल होएगा छुटकारा पाना। और इसे करके कहते हैं ना मूल मंत्र की इंपॉर्टेंस। अगर तुसी जपदे हो, नाम जपदे हो, सिमरन करदे हो, योर क्वालिटी ऑफ थॉट्स शिफ्ट, और जदों वो शिफ्ट होंदे ने तुहाडे बीइंग विच एक शिफ्ट आंदा है विद दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव बीइंग। व्हेन यू टेक एक्शन, the action is altogether different, the action is positive and you get good results. एक चीज़ है तो और समझो, यू नो we try to avail or kind of luxuries कि साढ़े को एवी होवे, it's very good to avail the luxuries. Now उन्हां luxuries नू
ਗੈਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਫਾਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਅਸ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਆਲ ਕਾइंड ऑफ एफर्ट्स टू रीच them। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ। ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਆਲ ਕਾइंड्स ऑफ limitations also, we develop all kinds of barriers as well। Almighty is around us, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, with that kind of positive energy, if we take the action to earn the money, to gather the luxuries, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। You will inculcate peace of mind within, and with that peace of mind, when you take the action to fulfill your desires, believe me, the result will be magical। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਜਿਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। what is a magic? ਮੈਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਜਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ, ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਰਵੈਰ, ਅਗਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। If you come in the space of forgiveness, you come in the space of giving। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ, you are in the space of giving people, you are in the space of not comparing yourself with anyone in the world, you are in the space of being the best version of yourself, your life will completely shift। That will be magic। You'll start creating magic in your life। तो एक क्वेश्चन असी अपने आप तो जरूर पूछिए, फिश दी लाइफ पानी तो बिना की है। हाउ मच वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फिश? इट इज इम्पॉर्टेंट, it is fish's life। Now similarly, we need to ask ourselves that how much Almighty is important for us। What water is to fish, Almighty is to all lives। उस परमात्मा ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ will help us in getting rid of all the vices, all the worries, all the tensions, all kind of competitions, all kind of rat race, and being the best version of ourselves। So आज इस चीज़ ਦੀ प्रैक्टिस करो। जस्ट चेक योर थॉट्स, चेक योर हैबिट्स। ਜਿਹੜੇ बार-बार थॉट्स ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਡਿਵੈਲਪਡ them in the form of certain kind of habit, and those kind of habits are unworkable for you। Check your workable habits and check your non-workable habits, and then try to break the non-workable habits। That will ensure balance in your life, and that will ensure workability in your life। पर ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਬਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰੋਗੇ, and you bring a shift in your being। So परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, meditation ਕਰੋ, and bring some major shift in your life, bring workability in your life, bring balance in your life। आज इस चीज़ की practice करो, then share your experiences with me। Take care, be balanced, be happy।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।